the particular record, I'm able to navigate to the route edit employee slash 2. So the ID of the employee, okay, whose records or whose details we have to change, we are able to, get that ID into the URL and load this formic form. But now the requirement is if the URL is edit employee, okay, if the URL is edit employee and not the add employee. So how do I come to know that whether this formic form that is loaded, whether it is for addition of the employee or deletion or modification of an employee? So first of all, I have to, fetch this ID. I have to fetch this ID from the URL. So how do I fetch that ID from the URL? Let us understand. So if I go in the routing path, I have given the the name of the query parameter key as :id. So I'm going to declare one variable that whether it is the edit mode, whose initial value I'm going to keep as false. I'm going to keep as false value. So edit mode एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है जिसका वैल्यू हमने फॉल्स रखा है. Now edit mode is a variable that we are going to maintain for knowing that whether we have to edit or whether we have to add. So false है मतलब हमें add करना है. अगर समझो पैरामीटर क्वेरी पैरामीटर आता है तो it will be true, right? It will be true in that case. So how do I do that? Now it's very simple कि अगर आपके URL में ID है तो it is for edit. अगर आपके URL में ID नहीं है तो it is for add. So what I am going to do is I am going to actually try to read the query parameter. So if the query parameter exists in the URL, then it is for editing. If the query parameter does not exist in the URL, it is for addition. So I'm going to say here const okay, const ID equal to use params. Now see, React Router DOM में there is one built-in hook. Okay, use params करके एक built-in hook है जो हमें पैरामीटर रीड करने को हेल्प करेगा. And use params is going to fetch, see, returns an object of key value pairs of dynamic params from the current URL. तो URL में से जो query parameters है वो रिटर्न करेगा. ओके, नाउ यू टेल मी कि अगर add employee है तो will there be any query parameters as ID? तो यूज पैरम्स कोई रिटर्न कर पाएगा क्या query parameters if it is add employee? Yes. क्वेश्चन यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर है क्या इस यूआरएल में? इज देयर एनी क्वेरी पैरामीटर मतलब क्या होता है? जैसे इसके बाद अगर आपने कोई वैल्यू भेजा तो दिस इज द वैल्यू, दिस इज द यूआरएल ना, दिस इज द वैल्यू. सो ऐड एम्प्लॉय के केस में इज देयर एनी क्वेरी पैरामीटर? देयर इज नो. सियर एक मिनट, लेट मी गो टू राउटिंग पाथ. ये दो यूआरएल देखो, which URL is having the query parameter in the URL? Add employee or edit employee? एडिट एम्प्लॉय एडिट एम्प्लॉय. एड एम्प्लॉय में कोई क्वेरी पैरामीटर नहीं है. ये जो कोलन दे के दिया है हमने, दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट क्वेरी पैरामीटर. ओके, तो की है आईडी और वैल्यू जो भी हम भेजेंगे /1 /2 /3. अंडरस्टूड? सो एड एम्प्लॉय अगर यूआरएल है तो देयर इज नो क्वेरी पैरामीटर. इन दैट केस अगर एड एम्प्लॉय लोड होता है तो इस आईडी में कुछ नहीं आएगा. बट एडिट एम्प्लॉय की वजह से अगर ये कंपोनेंट लोड होता है तो आईडी में कुछ फेच होने वाला है, वैल्यू फेच होने वाली है, राइट? सो यूज पैरम से वी आर ट्राइंग टू फेच आईडी, ओके, फ्रॉम द यूआरएल. अब हमें क्या करना है देखो, हमें वो जो भी आईडी है, वो जो भी आईडी मिला है हमें, उसके हिसाब से वी आर डिसाइडिंग कि वेदर इस कंपोनेंट में एडिशन का लॉजिक आना चाहिए या अपडेशन का. नाउ सी, इफ इट इज एडिट एम्प्लॉय,
Okay, if it is edit employee, then we have to fetch the ID from the query parameter. So this is the step 2. This is the step 1 and step 2. So this represents, okay, step 1 and 2 from this. अभी थर्ड स्टेप क्या है कि अगर आईडी आता है, इफ द आईडी इज देयर, इफ आईडी में अगर वैल्यू आता है, तो हमें एपीआई कॉल भेजना होगा. नाउ वी ऑलरेडी नो दैट दिस इज आवर एपीआई यूआरएल, लोकल होस्ट 3001. ये हमारा स्लैश एम्प्लॉय, ये हमारा एपीआई कॉल है, ये हमारा एपीआई का यूआरएल है. बट अगर एम्प्लॉय स्लैश, अगर मैंने 2 कहा, तो मुझे सिर्फ सेकंड वाले एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मिल रहा है, राइट. सो आई हैव टू सेंड अ रिक्वेस्ट. मतलब आईडी में जो भी आईडी आएगा, वो आईडी हम अगर हम यहाँ पे भेजेंगे, तो हमें सिर्फ उस एम्प्लॉय का डिटेल हमें मिलेगा. सो व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू फॉलो द स्टेप 3. सो इफ आईडी, if id if id is there, if id is existing, if id is there, तो हम यहाँ पे एपीआई कॉल भेजेंगे. एपीआई कॉल भेजने के लिए किसका यूज करना है हमें? which one I have to, which concept that we have already implemented I have to use यूज to get the record? use fetch. हाँ, गेट करना है, बट यूज फेच में हमने ऑलरेडी दे के रखा है ना ये सब. तो यूज फेच से हम ये जो है यूआरएल उसको भेजेंगे और वो हमें डेटा देगा. सो यहाँ पे व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू से हियर const if id is there, then I am going to say const data, या फिर ये const data जो है, यहाँ पे हम एक const existing item देती हूँ, instead of giving the data name. existing item define करके रखा है, and here I am going to say existing item equal to use fetch. अब यूज फेच को हमें भेजना है यूआरएल, यूआरएल भेजना है. यूज फेच हमने जो पहले क्रिएट किया था उसको यूआरएल भेजना है कि किसको रिक्वेस्ट भेजना है और क्या. तो अभी यहाँ पे हम एक यूआरएल क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट, ओके, लेट्स से ईएमपी यूआरएल. और उस सीएमपी यूआरएल में हमें क्या करना है, हमें सिर्फ उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड चाहिए. सो आई एम गोइंग टू से हियर, ओके, http localhost :3001 $, और ये जो भी आईडी हमें पैरामीटर से मिला है उसको यहाँ पे डाल देंगे. तो अगर आईडी 1 है, ओके, तो एम्प्लॉयज /1 जाएगा. तो हमें सिर्फ, हम एक्चुअली ये जैसे ये मैंने भेजा है ना रिक्वेस्ट कि मुझे सिर्फ सेकंड वाले एम्प्लॉय का रिकॉर्ड चाहिए, तो ये रिक्वेस्ट हम यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं बेस्ड ऑन द आईडी दैट इज कमिंग इन द पैरामीटर. अब उस यूआरएल को, उस ईएमपी यूआरएल को हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो हमें एग्जिस्टिंग आइटम में वो डेटा मिल जाएगा. एक मिनट, क्या बोल रहा है वो? यूज फेच इज कॉल्ड कंडीशनली, ओके, ठीक है. else existing item will be null. तो अगर एग्जिस्टिंग इधर ये है कि स्कॉल करने है, कॉल मतलब, okay, एक मिनट, we will not call it this way. And okay, so I have called this use fetch, and now in existing item I am going to get the data. Okay, तो ये step 3 जो है, this is the implementation of step 3. Okay, कि send the API call and get the current record, retrieve the current record of the given ID.
अब स्टेप 4 क्या है? इनिशियलाइज द फॉर्मिक फॉर्म विद द करंट डिटेल्स। इनिशियलाइज द फॉर्मिक फॉर्म विद द करंट डिटेल्स। तो अभी यहाँ पे देखो, आईडी में 0 देने के बजाय यहाँ पे आई विल से एग्जिस्टिंग आइटम डॉट आईडी। ओके, देन एग्जिस्टिंग आइटम डॉट नेम। यहाँ पे एग्जिस्टिंग आइटम डॉट सैलरी, एंड यहाँ पे आई विल से existing item dot image path. Okay, so what are we trying to do? We are trying to first of all read, ये edit mode छोड़ दो, we are trying to read the id from the parameters. Okay, जो भी अगर edit employee से आया है तो उसमें URL में definitely there is going to be id query parameter. तो id में वो वैल्यू आएगा जो भी यूजर ने दिया है, जिस रिकॉर्ड को यूजर ने सिलेक्ट किया है. ओके, देन वी हैव क्रिएटेड वन एग्जिस्टिंग आइटम करके, फिर यूआरएल फॉर्म किया. जो आईडी यूजर ने यूआरएल में भेजा उसके हिसाब से हमने यूआरएल फॉर्म किया, एंड वी आर सेंडिंग अ गेट कॉल टू दैट पर्टिकुलर यूआरएल, सो दैट हमें सिर्फ उसी एम्प्लॉय का, उसी आईडी का एम्प्लॉय रिकॉर्ड मिले. वो एग्जिस्टिंग आइटम में आएगा. अब जो भी एग्जिस्टिंग आइटम में आएगा, आई एम गोइंग टू असाइन इट एज अ इनिशियल वैल्यूज. ओके, नाउ व्हाट आई डू इज टू बी मोर प्रिसाइज, यहाँ पे एग्जिस्टिंग आइटम में I can do something like this. I am going to create a JSON object ID as 0, then name as empty, salary as 0, and image path as empty. I can do this. Okay, if I want कि अगर चलो ID नहीं है, if there is no ID, तो ये डिफॉल्ट वैल्यूज रहे. अगर आईडी है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा and it will show me the initial value. So let us see whether this is working or not. So I'll have to go over here. 1 minute. Okay, add employee. Okay, assignment to constant variable. एक minute. I'll just make it left. Just a minute. Let me check what is the problem. यहाँ पे undefined आ रहा है. एक मिनट. आईडी को undefined. Object of key value pairs. Okay, it is not taking it as a value over here. So if it is returning objects, then firstly we'll have to get the value, because see, if you observe this URL, okay, it is saying undefined. एक minute, let me just refresh this maybe. हाँ, क्योंकि add employee पे क्लिक करें तो add employee के वक्त यहाँ पे आईडी में कुछ नहीं है, right? So what we can do for this is I can I want this thing to be executed only if the ID is coming in the parameter. So how we can do that? Just a minute. अभी ये क्या हो रहा है? Even for add employees, when this is getting loaded, this part is getting executed. Actually, this part should get executed only if the ID is there in the URL. If ID is not there in the URL, this should be skipped.
this entire part should be skipped. So what we can do? Yes, any idea what we can do? I want this to have execute only when there is id in the parameter, otherwise no. इफ कंडीशन डालोगे तो ये यूज फेच कॉल नहीं हो सकता है, क्योंकि इन दैट केस यूज फेच ये कस्टम हुक है ना, यूज इफेक्ट एंड ऑल. So it should not be in the conditional manner here. If I put this everything in a if condition, that if id, और मैंने ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक मैंने पूरा उसको कमेंट डाल दिया. ओके, तो यहाँ पे नोड में वो एरर दे रहा है, तो इट्स कॉल्ड कंडीशनली. ओके, सो व्हाट वी कैन डू इज, आईडी अगर है, let me just think what we can do for this. Okay, let's see for edit employee whether it is working or not. यहाँ पे एम्प्लॉयज पे क्लिक करेंगे, देन आई क्लिक ऑन मॉडिफाई. सो मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आईडी नेम और वो फेच नहीं हो रहा है ना. व्हाट इज द एरर, लेट मी चेक. नो राउट्स, यहाँ पे उसने भेजा क्या रिक्वेस्ट? हाँ, एम्प्लॉयज 2 के लिए रिक्वेस्ट तो भेजा, क्योंकि हमने सेकेंड वाले इस पे दिया. तो व्हाई इट इज नॉट फेचिंग द, लेट मी जस्ट गिव इट const existing item. यहाँ पे existing item. Okay, let us see. Existing item dot id, existing item dot name, salary and image path. Okay, at least edit part यूज रन हो रहा है क्या, देखते हैं. यहाँ पे आईडी दिखना चाहिए एक्चुअली, ये रन होके. Why it is not showing? यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कंसोल डॉट लॉग एग्जिस्टिंग आइटम को डिस्प्ले करते हैं. हाँ, कंसोल डॉट लॉग 3 मैक्स वगैरह सब रिटर्न कर रहा है. एग्जिस्टिंग आइटम में इट इज रिटर्निंग लाइन नंबर 22 पे यू कैन सी इट इज रिटर्निंग. ओके, बट वो चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है फॉर्म पे, फॉर्म री रेंडर नहीं हो रहा है. ओके, व्हाट वी कैन डू इज आई विल क्रिएट वन स्टेट वेरिएबल. ओके, सी इसमें एग्जिस्टिंग आइटम में डेटा आ रहा है, इन एग्जिस्टिंग आइटम द डेटा इज कमिंग, बट क्योंकि फॉर्म पहले लोड हो चुका था और फिर एपीआई कॉल जाएगा, डेटा आएगा, एंड देन डेटा आने के बाद वापस से फॉर्म लोड नहीं हो रहा है, मतलब री रेंडरिंग नहीं हो रहा है. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल हैव वन स्टेट वेरिएबल ओवर हियर. लेट्स से const data, existing data comma set data equal to useState, और उसको हम इनिशियलाइज करेंगे empty JSON ऑब्जेक्ट से. बट जब यहाँ पे एग्जिस्टिंग डेटा आएगा हमारे पास, एग्जिस्टिंग आइटम फेच होगा, so what I can do is I can call set data and I can assign existing item, existing
existing item to it. तो वो existing data जो है वो change होगा, and instead of doing existing item dot id, I would rather go for existing data dot id, and then यहाँ पे existing item dot name, existing item existing data dot salary and existing. अभी क्या होगा, अगर state change हो रहा है तो आपका component भी re-render होगा. So let us see that how this is going to work. Okay, I'll just clear this. Maybe I'll refresh this entire page. Okay, I'll go in employees. I select third record, number of vendors to prevent the, okay, infinite loop में चला गया है वो. use fetch या यहाँ पे URL अगर चेंज होता है तो ही हम यूज फेच में ये चेंज कर रहे हैं. लेट अस सी वेदर दैट इज बोथ नो नॉट नाउ. सेकंड रिकॉर्ड पे क्लिक किया, इज गोइंग इन इनफाइनाइट री रेंडरिंग हो रहा है. सो लेट मी जस्ट रिमूव दोस चेंजेस. ये डेटा स्टेट वेरिएबल हटा देते हैं, देन ये सेट डेटा भी हटा देते हैं. डेटा एग्जिस्टिंग आइटम, okay, what we have to do is we want this particular thing to be conditional. URL तो जा रहा है बट यूज फेच के लिए प्रॉब्लम आ रहा है. ओके, जस्ट मिनट, आई जस्ट